Okay, so today we are going to study about mechanical vibration. So before midterm, we finished with the mechanics of machine portion, and now we are discussing mechanical vibration. Okay, so the book that we will be following, as I discussed in our first class, that will be mechanical vibration by S Rao, आर सिंगरी से एस राव. ठीक है, so ये वाली book जो है we will be actually following this book throughout, right? I am actually taking the slides from this book, and this is first edition with me. You can take any edition, there is no such difference, right? Okay, before moving further, let me tell you that actually we are going to start from chapter 2, okay? But I recommend that you need to study about chapter 1, not completely, but there are some topics that are self-explanatory, okay? You need to study those topics, right? So let us look at the book. I will let you know that what you are going to study in that particular chapter. Okay, so this is fifth edition, Mechanical Vibration by S.S. Rao. And if you look at the contents of the chapter 1, so there are lots of things, but I want you guys to study particularly about these things. Like you need to look at brief history of the study of vibration, that why we are studying vibration being a mechanical engineer. Okay, so what is the origin of the study and different concepts. Okay, so these are actually, you need to spend some time and you need to study about the brief history of the vibration, right? Then why vibration is important particularly for mechanical engineers, right? So you need to look at these things also. There are some basic concepts. What is vibration? What are the basic building blocks? I think we studied about this thing, if you remember, that we have actually spring, mass, and damper, right? And we also discussed about their relevant formulas, that F is equal to K is for spring, and similarly F is equal to CV is for damper, and F is equal to MA or MX double dot is for mass, right? So these are actually the basic building blocks of vibrating mechanical system. And we also discussed about these things, that if you want to displace something, the property that actually resists you is the elasticity, and you can say that that is a spring element what there that is resisting you. Okay, and we are basically making the analogy of elasticity with the spring. Similarly, if you want to give velocity to a system, the damping will oppose you, and if you want to accelerate a system, inertia or mass will oppose you. So these are basically some basic concepts. Similarly, this also is discussing about what is time period, what is actually amplitude, what is the maximum displacement. So these things, I think we are not going to spend time on this. So these are self-explanatory. I recommend that you need to study about these things. Then about the types of vibration, okay, or you can say classification of vibration. So we have free and forced vibration that we will be discussing in subsequent chapters. Okay, the free vibration we are discussing in this particular chapter. Then in chapter 3 we will discuss about the forced vibration. But let me tell you that the free vibration is basically that you are initially applying a force, and then you remove that force, and the system then vibrates with its natural frequency. That is the free vibration. What is the force vibration? You know that when you apply the force, and the force is applied constantly. The example is that, let's say for example, there is some mechanical installation up there, let's say on the top roof of mechanical engineering building. So as long as that machinery is running, and if there is some vibration, that vibration is transferred to the floor, and when you turn off that machine, the vibration will vanish. So that is basically your force vibration. We will discuss these things in subsequent chapters in detail, but this classification is, it gives you some general overview.
Then we have undamped and damped system where there is a property of damping present over there, that is damped vibration. You can say that with respect to our per cycle of the vibration, if the amplitude of vibration decreases, then you can say that that is damped vibration. And if it is not decreasing and it oscillates the same manner that you disturb the system, so this is the undamped vibration. Similarly, we have linear and non-linear vibration. If the input and output they are connected linearly, this is linear vibration, okay. And similarly, if they are connected with a non-linear equation, you can connect them, so that is non-linear vibration. If you remember, maybe in your EPC also, that if you develop the governing equation for a simple pendulum, right? So that is, and you found out that the natural frequency is equal to g by l under the root. So initially that equation of pendulum is not linear, right? Then actually we use the assumption of sine when theta is very very small, then sine theta is equal to is approximately equal to theta, and with this assumption you can make that equation linear equation, okay? But in essence that is not a linear equation because sine term is involved over there, okay? F is equal to kx that is the restoring force. This is actually a linear equation. So we will actually start with linear equation, and then if we have time, then we will also discuss about non-linear vibrations or random vibrations also. Okay, then we have deterministic and non-deterministic or random vibration. Deterministic, that you know about the force, okay? So you know that let's say the force is periodic, it is harmonic, it is impulse or some other type of force. So if it is known, okay, then we say that this is deterministic vibration. But if it is not known, that what is the cause of excitation and what type of excitation is there, okay, you cannot expect. Like in the case of earthquake, we are not expecting that. We cannot expect that what type of excitation will be there. So these types of vibrations are known as random vibration. And same is the case for if your car is moving on a newly constructed road, so you can see that we have actually gravels of different sizes. So the chassis are, the shock absorber that is, taking that force. It is basically a non-deterministic. Okay, and why we are saying that deterministic and non-deterministic, because there is actually a thumb rule that if you know about the input, you can expect more or less similar output from the system. Like if the system is excited harmonically, you can expect that similar type of harmonic response will be there in the system. And same is the case for periodic motions and similarly impact motion, etc. But in case of random vibration, we cannot develop such relationship between input and output. So that is basically random vibration. So I want you guys to this actually I gave you some brief introduction, but you need to look at this properly. Right? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Then after that, there is actually uh, there is actually another topic, and that is about spring, okay, and what are the different combinations of spring, like if the springs are connected in series or parallel, how to find out their equivalent, okay, and similarly if the dampers are connected in parallel or in series, how to find out their equivalent, and same is the case for masses also. So I should say that combinations of springs, dampers and masses, okay, and to find out the equivalent, because we will need these things. So you need to look at these things also. Similarly, we have actually different types of dampers, okay. So we have conventional viscous damper, where we have the construction is, it is actually given here, but let me tell you that the construction is that we will be having a cylinder, and inside that we are having a piston and a hydraulic fluid is there, okay, and it is having particular properties. So the spring actually stores elastic potential energy, and it is given to the damper, and the damper actually dissipates the energy. The purpose of having a damper over there is to diminish or to dissipate the energy per cycle, okay.
So there could be this. This is actually conventional damper, or you can say dashpot. There could be other types of dampers also, like hysteretic damper, and similarly, air resistance is also a type of damping. And we also have Coulomb damping or dry friction, that like if you want to, if there is some vibration and per cycle, okay, the mass is exposed to, some surface, it is having a friction. So per cycle, there is an opposite force applied on the system, which tries to decrease the displacement from equilibrium position. Okay, so that is also dry friction or Coulomb damping. It is also a type of damping. We will discuss maybe at some point these things. Okay, but you need to look at these things in chapter 1. Okay, इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं. You can see that there are some MATLAB introduction and some examples using MATLAB also. I don't want you guys to look at those things. If you want, you can, but these are not included in your course. But at least the things that we discussed, I want you guys to study, okay, in this particular chapter. Now, after studying these things in the chapter 1, then we have this chapter 2, right? And as far as, remember that I'm taking the slides exactly from your book, okay? So the explanation you can find in your book. Maybe you are having the soft form or hard form. If you not, then I will upload that, okay? What are the learning objectives as far as chapter 2 is concerned? So the first bullet is derive the equation of motion of a single degree of freedom system using a suitable technique such as Newton's second law of motion, D'Alembert principle, the principle of virtual displacement, and the principle of conservation of energy. These two methods, Newton's second law and conservation of energy, they are considered suitable for undergrad. So we will discuss about these two in detail. Then we have to linearize the nonlinear equation of motion if we have, or if we have some nonlinear equation, so we can, linearize those equations. Then the third thing is solve a spring mass damper system for different types of free vibration response depending on amount of damping. If it is undamped, underdamped, overdamped, or critically damped system, we will discuss about these things. You need to know at the end of this chapter. Compute the natural frequency, damped frequency, logarithmic decrement, and time constant. Okay, what are these things? Basically, when you derive the equation of motion, there are two important things that we want from that particular equation. Okay, one is to find out the natural frequency of the system. And if you remember, I told you that why we want that natural frequency. Okay, because we want to avoid this condition. And what is this condition? Omega n. If this is equal to omega, the natural frequency of the system, if it becomes equal to the forcing frequency of the system, at that particular time the system vibrates with the maximum amplitude, and it is known as resonance. And if the system operates at resonance for longer time, then failure can be caused in that particular system. So actually we want to avoid this one. तो ये चीज जो ओमेगा इन है ये आपको कहाँ से पता चलती है? जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं. सेकंड थिंग इज दैट if you have equation of motion, that will be a differential equation. So you can solve that differential equation in that particular variable when you can find out the response of the system. ठीक है? ये डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या है, इसके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं. तो इंशाल्लाह इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है? Then we have to determine whether a given system is stable or not. This is actually a criteria, and this is actually the thing that I told you here. This is to find out the response of the system for conventional damper, for Coulomb damping, okay, or hysteretic damping. What is hysteretic damping? This is also known as structural damping. ये chapter 1 में आप लोग थोड़ा सा देखेंगे. ठीक है कि when you apply a force on a system, on a structure, there is a slippage that occurs between the layers, the internal layers of that particular material. उसको हम कहते हैं structural damping or hysteretic damping. और कूलम damping मैंने आपको बताया कि ये ड्राई फ्रैक्शन की वजह से होता है. ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों को, मतलब these are actually the learning objectives, कि आप लोगों को इन चीजों का पता होना चाहिए. राइट? क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
Now we are going to discuss free vibration of an undamped translational system. Okay, so इसमें तीन चीजें हैं. If you look at this, तीन चीजें कैसी हैं? एक तो ये फ्री वाइब्रेशन है, राइट. इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको ये बात बताई थी कि द टॉपिक्स एंड द चैप्टर्स, दे आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. तो शुरू से आप की समझ में आएगी, तो बाकी जो है ना फिर आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं. वाई? बिकॉज लेट्स से if you will be discussing about force vibration, so I will refer to some of the things in chapter 2. तो वो अगर आपको नहीं आती तो थोड़ा सा मसला हो सकता है. So for that reason you need to be with me, from scratch. So this is free vibration, एक चीज. दूसरा अनडेम्प्ड वाइब्रेशन है. देयर इज नो damper present over there. And then we have translational vibration. Okay, the coordinates that you will be using are x, y, z. Undamped system, we don't have any damper present over there. Free vibration क्या है वो थोड़ा सा नीचे हम देख लेते हैं. A system is said to undergo free vibration when it oscillates, ठीक है, only under an initial disturbance with no external force acting afterwards. तो इनिशियल डिस्टर्बेंस आपने अप्लाई की, वो इनिशियल डिस्टर्बेंस क्या हो सकती है? वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है. आप जो है ना सिस्टम को इनिशियली डिस्प्लेस कर दें, फिर जो है ना वो डिस्टर्बेंस आप हटा दें और सिस्टम वाइब्रेट करे, तो उसको हम कहते हैं फ्री वाइब्रेशन. ओके, एग्जांपल्स ये क्या देता है? सम एग्जांपल्स आर द ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम ऑफ द क्लॉक. ठीक है, पेंडुलम उसको जब आप इनिशियली डिस्टर्ब करते हैं और फिर जो है ना ये ऑसिलेट करता है, तो वो फ्री वाइब्रेशन होता है. ठीक है. एंड देन वी हैव वर्टिकल ऑसिलेटरी मोशन फील्ड बाय साइकिल, क्योंकि उसमें एब्जॉर्बर नहीं होता ना, सिर्फ स्प्रिंग होता है. ठीक है, तो वो जो 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 ऑसिलेटरी मोशन जो है वो फील करता है बाय साइक्लिस्ट. तो वो ऑन रोड बम्प के ऊपर अगर वो जाता है या स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाता है, तो वो भी आपके पास क्या है? दैट इज आल्सो फ्री वाइब्रेशन. आफ्टर सम टाइम जो है वो वेनिश हो जाता है ड्यू टू डिस्टेंस. और देन जो है चाइल्ड आर स्विंग आफ्टर इनिशियल पुश. ठीक है, वो भी जो है ना जब आप इनिशियल पुश लगाते हैं और उसके बाद जो है द सिस्टम देन वाइब्रेट. ठीक है, if there is no present damping present over there, all these things should vibrate forever, but there are resistances. Okay, so for that reason actually it stops at some point and then we need to push it again. ठीक है, तो इस तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें you initially applied the disturbance and then you remove that disturbance and there is no force afterwards. So when the system vibrates in this manner or under this condition, that vibration is known as free vibration. ठीक है, राइट. अच्छा, तो ये हम बेसिकली फ्री वाइब्रेशन, अनडेम्प्ड सिस्टम के लिए ट्रांसलेशनल वाइब्रेशन, एंड सिमिलरली we are discussing we are deriving the equation of motion for single degree of freedom system. And you know very well, हमने डिस्कस किया था इसको कि if a single coordinate is needed to describe the system in a complete way, we say that this is single degree of freedom system. ठीक है, तो in for free vibration, undamped and translational and single degree of freedom system के लिए, if you take this is actually an example, right? So you can see here that there is a mass that is rested upon this horizontal surface with the help of these rollers. इस rollers का मतलब ये है ना, remember कि there is no, we are neglecting the force of friction. ठीक है, so there is actually, and this is supported to this fixed support with the help of a spring having stiffness K. O is the equilibrium position, and this direction actually shows that the displacement is taken is positive in this direction. ठीक है, सिमिलरली वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी एंड एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी. ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो है ना देना जरूरी है. अच्छा, तो you can see here that if for example you initially disturb this system, let's say you take this mass from that point to this one. ठीक है, ये initially आप disturb करते हैं इस चीज को, let's say by an amount x naught. तो आपके पास क्या है, and you remove that disturbance, you release the mass, right? So due to inertia it will not stay here but it will go here and it will vibrate in this manner. Now if you want to track where the mass m is at certain time, so only x is needed.
X से भी आप डिनोट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, Y से भी डिनोट कर सकते हैं, Z से भी डिनोट कर सकते हैं, बट दीज आर एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन फॉर ट्रांसलेशनल सिस्टम। ठीक है, तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, इसलिए जो है ना ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। अच्छा, ये कि आपके पास द वेट of this object is acting in the downward direction, but the same magnitude in opposite direction, normal reaction is in the opposite direction, so it cancel out the effect of each other, and there is only a single force that is applied by this spring on this particular system. ठीक है, so इस किस्म की चीज अगर आपके पास हो and you want to derive the equation of motion, and from there then you want to find out the natural frequency of the system, and ultimately if you solve that differential equation and to find out the response of the system, so how we can find these things, we will see these things in later slides, right? But before that, I actually added some slides from your book, and they are saying that if you look at the analysis procedure, okay, the vibrational analysis procedure. So first, actually, is that we need to identify that what is the degree of freedom of a system. Okay, then you need to model the real system with a spring mass system. ठीक है, तो आपके पास एक रियल सिस्टम होगा, उसको आपने स्प्रिंग मास सिस्टम, इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास सिस्टम में कन्वर्ट करना है या मॉडल करना है। देन आफ्टर दैट यू नीड टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन और गवर्निंग इक्वेशन और मैथमेटिकल मॉडल एक्सेट्रा, या फार्मूला जिसको आप कहते हैं, वो आपने डिराइव करना है। वंस यू हैव दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिंपल। ठीक है, तो वो कैसे है, क्योंकि वहां से फिर हम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द ओवरऑल simple analysis procedure as far as vibration is concerned. यहाँ पे एक दो एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है कि भाई इफ यू हैव दिस स्टाल स्ट्रक्चर, ओके, तो यहाँ पे दिस इज द मास एंड दैट इज एक्चुअली रेस्टेड अपॉन दिस फिक्स सपोर्ट। ठीक है, या ग्राउंड, इसका लेंथ, कॉलम की लेंथ जो है वो एल है, दिस इज हैविंग दिस मास, ओके, एंड इफ देयर इज सम वाइब्रेशन, ठीक है, ये एग्जेजरेटेड व्यू है, ठीक है, मैग्नीफाइड व्यू है, इफ देयर इज सम वाइब्रेशन प्रेजेंट लाइक दिस, ओके, तो इसको आप कैसे मॉडल कर सकते हैं, दिस स्प्रिंग एलिमेंट इज टेकन एज इलास्टिक एलिमेंट एंड यू आर कंसिडरिंग दिस एज स्प्रिंग, और ये जो है ना इसका मास है, तो ये सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम से हम इसकी एनालॉजी बना सकते हैं। सो दिस इज अ रियल सिस्टम, दिस इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, अब रिमेंबर दिस के इज एक्चुअली विल बी के ऑफ दिस बार, जो कि क्या है 3EI/L³ है। ठीक है, तो ये जो है ना, और मास क्या होगा, दिस विल बी द मास ऑफ दिस ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ठीक है, so this is actually modeling of a real system with spring mass system. Same is the case for this building frame also. ठीक है, ये rigid floor है आपके पास, this is actually that rigid floor, and this is actually the frame, and these two are elastic columns, right? ये elastic columns है, तो हम क्या करेंगे, we will find out the equivalent of these two columns, क्योंकि ये elastic element, remember ये यहाँ पे दिखाया गया है ना कि the mass is negligible, the property that is required from these columns is not the inertial property, rather the elastic property, तो इसलिए जो है ना इसके मास को हम नेग्लेक्ट करते हैं, although इसका मास होता है, right? So for that reason, if you want to model this as spring mass system, equivalent spring mass system, तो क्या होगा, इन दोनों का जो है ना आपके पास एक इक्विवेलेंट स्टिफनेस आएगी। ठीक है, जो कि हम इससे के इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं यहाँ पे, राइट, एंड दिस इज बेसिकली दैट मास। तो इस किस्म की चीज को जो है ना हम स्प्रिंग मास में मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, ये विद एक्सपीरियंस समझ में आता है कि कैसे हम इसको मॉडल करते हैं, बट एनीवे यू कैन मॉडल रियल सिस्टम, सिंपल सिस्टम्स विद स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट let us look at this free vibration of an undamped translational system. So as I told you how to find out or derive the equation of motion. So we are using first this Newton method, ठीक है, and you look at this thing. So यहाँ पे आपके पास the same mass is there and it is rested upon the horizontal surface with rollers. This means that actually there is no force of friction, or we are neglecting the force of friction. And this
is support. This is connected with this fixed support with the help of a spring having this stiffness K. This is the equilibrium position, okay? And similarly, the direction of the displacement is taken is positive in this way, right? And remember, there is also another thing you need to know. Here we are discussing lumped parameter model, ठीक है? क्या है आपके पास? Lumped, lumped, lumped modeling. Lumped modeling का क्या मतलब है कि we are considering that the mass of the system is concentrated at some point, ठीक है? ये concentrated mass है, मतलब हम यहाँ से इक्विलिब्रियम से देखते हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर ये आपके पास स्ट्रक्चर है तो ईच एंड एवरी पार्टिकल जो है ना वो डिफरेंटली बिहेव करेगा, लेकिन वी आर सेइंग दैट बस कि आपके पास ये इक्विलिब्रियम है, ये लाइन से जो है ना हम कंसिडर करते हैं, तो इसको कहते हैं लंप पैरामीटर मॉडल। दूसरा जो है ना हमारे पास जो मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, ये शायद हमने डिस्कस किया भी था, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस मॉडलिंग। लंप पैरामीटर मॉडल में हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं, कंटिन्यूअस मॉडलिंग में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं। तो इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस बार, राइट, तो अब ये बार जो है ना, देयर इज नो मास कंसंट्रेटेड एट सम पॉइंट, रादर वी आर कंसिडरिंग ये जो पूरा मास है आपके पास, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो इसका ईच एंड एवरी पार्टिकल जो है वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। तो इसलिए जो है ना फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके एंड कंटिन्यूअस मॉडलिंग को यूज करके जो है ना हम इसका इक्वेशन मालूम करते हैं, ठीक है। एनीवे, so now this is actually the spring mass system. If you want to derive the equation of motion using Newton's method, तो न्यूटन मेथड बेसिकली आपको क्या कहता है कि वेरी यू नो वेरी वेल कि आपके पास बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मास इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, राइट। और जो हम सिंपली लिखते थे कि भाई हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है सिंपल नहीं बल्कि दिस F इज विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। यानी फोर्स भी अगर आपके पास है तो इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज मास एंड एक्सेलरेशन को रिमेंबर हम जो है ना ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का टर्म है। इफ यू टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव यो तो आपके पास ये वेलोसिटी का टर्म है, एंड इफ यू टेक द सेकंड डेरिवेटिव तो आपके पास ये क्या है, एक्सेलरेशन का टर्म होता है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू विल यूजिंग एक्स डबल डॉट फॉर एक्सेलरेशन। तो ये जो आपके पास पेरेंट फार्मूला है ना कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द बॉडी आर इक्वल टू इनर्शिया फोर्स, इसको हम कहते हैं न्यूटन लॉ। इस लॉ को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने से पहले यू नीड टू ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, यू नीड टू नो एंड यू नीड टू नोट दिस थिंग दैट यू नीड टू ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेस्ड पोजीशन का क्या मतलब है, डिस्प्लेस्ड पोजीशन का मतलब ये है कि इस मास को जो है ना हम यहाँ से लेके गए और लेट से हमने इसको डिस्प्लेस किया एंड वी हैव दैट मास ओवर हियर, ठीक है। एंड लेट से वी डिस्प्लेस्ड दिस मास बाय एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज एक्स नॉट, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है ना ये वाली, दिस इज द डिस्प्लेस्ड पोजीशन ऑफ द मास। You need to draw the free body diagram in this position, ठीक है। यानी इस पोजीशन के ऊपर, इस मास के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करती है ना, तो आपने उसको शो करना है, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट इफ यू डिस्प्लेस दिस मास in the rightward direction, there is the only force that is the restoring force of the spring that is acting upon this body in the opposite direction. ये restoring force है। बाकी जो है ना मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर दूसरा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन देयर इज द फोर्स, बट इन द अपर डायरेक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक्सेप्ट दिस रिस्टोरिंग फोर्स देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अपॉन दिस मास, ठीक है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये मैंने जो आपको बताया कि ऑलवेज ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन, उसका मतलब ये है क्यों, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आप ये जैसे ये इक्विलिब्रियम में है ना, equilibrium position mein, if you draw the free body diagram, all the forces are equal in magnitude and opposite in direction. For that reason, the system is in equilibrium. So there is no need to draw the free body diagram, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई forces जो है ना वो नहीं लग रही। तो इसलिए जो है you need to first displace that and draw the free body diagram, and then from there you need to apply this law.
वो लॉ क्या है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एम डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर। यही चीज हमारे पास एम एक्स डबल डॉट होता है, ठीक है, राइट। सो दिस इज द सेम थिंग। तो अगर ये हम कर लें तो यू सी दैट कि हमारे पास जो है क्या होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है। और डायरेक्शन क्या है कि कोई भी एक डायरेक्शन जो है ना आप डायमेंशन ले सकते हैं, बट इन रूल take their direction is positive in which initially the mass moving। तो इनिशियली हमने मास को कहाँ पे मूव किया है, राइट पर डायरेक्शन में, तो इसलिए जो है ना प्लस एक हम ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं। तो कोई भी फोर्स अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ना तो उसको हम क्या करेंगे, वी विल टेक दैट एज नेगेटिव फोर्स, ठीक है। यू कैन सी एफ ऑफ टी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये एक भी फोर्स लग रही है तो फोर्स क्या है, के एक्स है, बट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। राइट साइड के ऊपर अगर जीरो हो, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल सर इक्वेशन होता है। जी सर आपकी आवाज कट गई, वो इक्वेशन फिर बताएं सर, जी जी, पूछें। आपकी आवाज कट गई थी सर, दोबारा से बताएं वो पहली इक्वेशन से सर। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, एम आई ऑडिबल? यस सर, अभी आ रही है सर। यस सर। तो लेकिन आपका स्पीकर बहुत, स्पीकर नहीं, सॉरी सर, ये माइक आपका खराब है सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? माइक खराब है सर आपका। जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, अभी आ रही है सर बस। सर क्लियर नहीं है। ओके, सो आई वाज टेलिंग यू दैट, यू नो, प्रेजेंटेशन ऑन कर लें सर, प्रेजेंटेशन नहीं ऑन। दिस इज द, this is basically the homogeneous, this is the स्क्रीन नजर homogeneous नहीं। ordinary differential equation, okay, and this zero actually shows that this is free vibration. Similarly, प्रेजेंटेशन ऑन कर ले सर, हाँ जी, प्रेजेंटेशन ऑन स्क्रीन कर ले। नजर। स्क्रीन स्क्रीन शेयर नजर नहीं कर आ रही। रही? ओके ओके, वेट,
Haji, am I audible now? Yes, sir. Okay. So, okay, we were saying that, here, if you have this equation of motion that is mx double dot plus kx is equal to 0, so this is the first ordinary differential equation, right? And this is second order differential equation because we have actually this x double dot is the d square x by dt square. Okay, remember this is actually in time domain, right? There is also frequency domain. तो ये आपके जहन में हो कि ये असल में x of t है. अच्छा, this is x of t in time domain. Okay, and so I should say I should write it here t. Okay, and similarly I can also write it here this t. So first ये क्या है? And this is the second order ordinary differential equation, and this is also homogeneous equation, right? Because at the right side you are having 0 here, and there is no damping present over there. कोई c का term आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए जो है ये undamped वो भी है equation भी है, ठीक है? So this is the required equation of motion as far as the that particular system is concerned. Now from here, जिस तरह मैंने आपको बताया कि you can find out, let's say this is mx double dot plus kx is equal to 0. So if you multiply this by m, ठीक है, तो आपके पास जो है x double dot plus k by m x is equal to 0. This k by m is basically that is the coefficient of displacement, and it shows square of the natural frequency, ठीक है? So I can write this like kx double dot plus omega n square x is equal to 0. तो ये आपके पास, बल्कि आप इस तरह लिख सकते हैं कि अंडर द रूट k by m is your omega n. तो ये आपके पास जो है ना सर्कुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम है. एंड if about this, right? So you know that if you know about k and n, you can find out the value of omega n. And if you know about omega n, you can avoid this coincidence. ठीक है? So this is actually the first requirement. ये operational frequency है. ठीक है? तो या operational frequency को you are taking this above omega n, और हम जो है ना इसको below omega n रखते हैं ताकि resonance condition को हम avoid कर सकें. There are some conditions के this सर omega ओमेगा और is ओमेगा also एन में not क्या in your फर्क है? hand, okay? Because you need to operate that particular हेलो machine at that particular speed. तो उसकी भी हमारे पास, और अगर आपके पास, so this means that this is actually a known quantity, but this is not in your hand. तो इसका मतलब ये है, और somehow if there is some coincidence of these two, तो फिर जो है ना हमारे पास there are other techniques like dynamic vibration absorber etc., जो कि हम इस कंडीशन को avoid कर सकते हैं. Yes, जी, am I audible? Yes, sir.
मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ जी। जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर, आप कंटिन्यू करें। हाँ मोहम्मद नुमान राशिद, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। अब्दुल समद शाह, नुमान खलील। ओके, मुझे रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स दिया करें, ठीक है? Sir, we are responding. Okay. So, and this is, if you want to derive that equation that using energy method, तो वहां से आप कैसे करते हैं? जस्ट यू कैन सी कि एनर्जी मेथड में हमारे पास क्या होता है कि दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, इट इज कांस्टेंट, ठीक है? So they are interconvertible, but the total energy will be constant. तो ये कैपिटल T जो है ना, ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज है और ये सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज है, ठीक है? इन ये कांस्टेंट आपके पास रहेंगे। और इफ यू टेक द डिराइवेटिव ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, यू नो वेरी वेल दैट राइट साइड के ऊपर डिराइवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो है ना वो जीरो के बराबर आता है, ठीक है? सो जिस तरह हमारे पास summation of f of t is equal to mx double dot. This is the principal equation of using Newton's method. तो इस तरीके से एनर्जी मेथड का जो प्रिंसिपल इक्वेशन है वो ये है कि d by dt कैपिटल T प्लस u इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास अगर ये सिस्टम है ना, इफ यू हैव दिस सिस्टम, ठीक है? तो इसमें जो है हमारे पास एक ही काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है? एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? हाफ एम वी स्क्वायर। वी को हम एक डॉट कहते हैं, तो दिस इज दैट काइनेटिक एनर्जी। एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यू नो, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर टी और यू की जगह इफ यू these values, okay, and differentiate with respect to time, तो यही इक्वेशन जो है ना आपके पास आएगी, ठीक है? यू विल गेट द सेम इक्वेशन फ्रॉम हियर, mx डबल डॉट प्लस k इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? नाउ सो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इफ यू हैव द सेम इक्वेशन, राइट, so one is that you can find out the natural frequency of the system, ठीक है? And the second thing is you need to find out the response of the system. तो रिस्पांस ऑफ द सिस्टम को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन? वो जो है ना, वी नीड टू सॉल्व दिस गवर्निंग इक्वेशन। तो इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि आप जो है ना अपने जो बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो यहाँ पे आपके काम आएगा, ठीक है? तो इसको ज्यादा डिटेल से हम नहीं देखते, बट यू नो दैट कि हम अगर इस इक्वेशन, दिस इज इन टाइम डोमेन, राइट? दिस इज एक्स ऑफ टी एंड सिमिलरली दिस वन इज आल्सो इन t. So this is assumed solution, that is x of t is equal to c, that is a constant, and e to power st, ठीक है? ये भी आप ले सकते हैं। you can also take this uh, this a cos omega nt, ठीक है? बल्कि cos omega ये इस तरह भी आप ले सकते हैं, या cos omega t भी आप ले सकते हैं, ठीक है? इसको क्यों हम लेते हैं? द रीजन इज दैट कि हमारे पास एज्यूम सोल्यूशन जो है, क्योंकि हमने इसके डेरिवेटिव वगैरह लेने होते हैं, ठीक है? डेरिवेटिव कैसे लेने होते हैं कि एक्स ऑफ टी की जगह डायरेक्टली आप ये पुट करते हैं, ठीक है? यू कैन पुट डायरेक्टली दिस थिंग, बट फॉर एक्स डबल डॉट, इसके लिए यू नीड टू डिफरेंशिएट राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ट्वाइस। तो हम वो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इसके जो डेरिवेटिव है वो आसानी से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इससे जो है ना एज्यूम सोल्यूशन हमारे पास ये चीज है, ठीक है? अच्छा, दूसरी एक रीजन उसकी ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनपुट फॉलोज आउटपुट। तो जिस तरह जो है ना आपके पास हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऑसिलेशन जो है ये क्या होगी, दिस विल बी साइनोसाइडल ऑसिलेशन। और साइनोसाइडल जो है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो है ना या एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हम डिनोट करते हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e टू पावर, दे आर इंटरकन्वर्टेबल विद दिस फार्मूला, आइलर फार्मूला जिसको हम कहते हैं, e टू पावर आयोटा थीटा, राइट?
e to the power minus iota theta and divide by 2, this is equal to I think cos theta और sin theta, ठीक है। तो ये इंटरकन्वर्टेबल है। तो अगर आपको बल्कि ये आगे है भी मेरे ख्याल में, ये इनिशियली जो है इसको इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेता है, फिर बाद में जो है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करता है। बट एनीवे ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इनिशियली हम ये सिस्टम इस तरह इसका सोल्यूशन इज्यूम करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन इज्यूम किया, डायरेक्टली जो है ना यहाँ पे पुट किया, डबल डिफरेंशिएट करके जो है ना आपने यहाँ पे पुट किया, सिंप्लीफाई किया, वो स्टेप जो है ना इसमें छोड़े हैं, आपके पास दैट डिफरेंशियल इक्वेशन becomes this equation m square plus k and c is equal to 0, c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है that is basically n now is a quadratic equation, ठीक है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपके पास इसके दो रूट्स आएंगे s1 और s2, ठीक है। और जब इसको आप ओपन अप करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है x ऑफ t, क्योंकि दो रूट्स हैं, तो x ऑफ t दैट इज द सॉल्यूशन, दैट विल बी c1 e टू पावर iota ओमेगा इन t एंड c2 e टू पावर माइनस iota ओमेगा इन t, क्योंकि प्लस माइनस आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। फिर ये आइडेंटिटी कहता है, अगर आप यूज कर लें, दिस इज एक्चुअली द आइडेंटिटी दैट यू कैन कन्वर्ट these iotas, exponential functions to trigonometric function। तो ये अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, और इफ यू पुट दिस थिंग ओवर हियर, तो आपके पास जो रिस्पांस ऑफ द सिस्टम आएगा दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी a1 cos omega in t and a2 sin omega in t, where a1 and a2 they are constant, okay, and the values of these two constants can be determined using initial conditions, right। ये चीज हो गई। और ओमेगा इन इज अ सिस्टम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये ओमेगा इन जो है ना, ये आपको पता देखिए ये है, तो के और एन चूंकि आपको पता है, सो ओमेगा इन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि एट द राइट साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन you can find out A1 and A2 initial conditions. What are those initial conditions? We will discuss. And using the system properties, you can find out omega n. So the only unknown is t. Giving different values to t, you can find out different values of x of t. ठीक है, and you can even plot that, ठीक है। तो आप जो है ना t अगेंस्ट x ऑफ t जो है वो आप प्लॉट कर सकते हैं, और वो प्लॉट बेसिकली आपको बताता है कि नाउ एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम the mass is this much distance away from equilibrium position. So at any instant you can track the position of the mass, इसलिए जो है ना इसको हम गवर्निंग इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं, और वो क्या है कि दीज आर द इनिशियल कंडीशन। तो इसको थोड़ा सा देख लें। इनिशियल कंडीशन क्या है कि आपके पास दिस वाज एक्चुअली दैट सिस्टम, दिस इज एक्चुअली दैट मास, दिस इज इक्विलिब्रियम एक्स, ओके। तो जब इसको आपने डिस्प्लेस किया, ठीक है, दिस डिस्प्लेसमेंट, दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज लेट्स से एक्स नॉट, तो हम कहते हैं कि भाई एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, जैसे आपने जो है ना इसको डिस्टर्ब किया, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वी आर डिनोटिंग दैट डिस्प्लेसमेंट एज एक्स नॉट, ठीक है, दैट इज एक्चुअली योर डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट। तो अब हम क्या करेंगे कि यू नीड टू पुट एक्स नॉट हेयर, right, and you know very well that time t is equal to 0, so this will be 0 and sin 0 is equal to 0। बिजली लाड़े हमाद सर को बताओ यार। मैसेज किया हुआ है यार मैंने। यार मैं तो कहता हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर ही भेज दें सर, काफी डिस्टरबेंस है इस तरह से तो। हाँ ना यार, रिकॉर्डेड लेक्चर सही होगा।
बोल दूं? इधर वैसे भी, हाँ ना, इधर वैसे भी बंदा क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता, क्वेश्चन पूछते हैं वो सर के पास पता नहीं किस टाइम जाता है। तुम पता नहीं कब से सवाल पूछ रहे थे, वो उसने अपनी पूरी बात खत्म करके फिर कहता है कि कोई तो रिस्पॉन्ड किया करो ना। ना ना, वो लड़के से पूछा है, ये हम रिस्पॉन्स कर रहे थे, वो सर तक जा नहीं रही थी आवाज। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ कर ले वाजिद। मेरे पास ऑप्शन नहीं है यार रिकॉर्डिंग ऑफ करने का। लैपटॉप से कौन दे क्लास में इंटर हुआ है वो देख ले, उसके पास ऑप्शन आएगा। Am I audible? यस यस सर। सर। Okay, मेरे पास सिग्नल कंप्लीट है. I don't know what is the issue over here, but anyway. So सर वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दे सर। यस सर, रिकॉर्डिंग जल्द से यस जल्द। यस सर, रिकॉर्डिंग अपलोड करना सर। okay. Um, हमारी अभी अगली क्लास भी शुरू so होने वाली। you are here, okay? That you know. Okay, so we see here that this is actually the initial condition that we have at time t is equal to 0, we have this initial displacement denoted by x naught. And if you put t is equal to 0 in this equation, so sin 0 is 0, so ये आपका पूरा term जो है वो 0 हो जाएगा. And cos 0 is 1, so ये यहाँ से आपके पास a1 आ जाएगा. And at the left side you are having x naught. So this is first constant a1 is your x naught. And similarly, to find out a2, what you need to do is, look, you need to differentiate this equation. ठीक है, ये जो आपके पास equation है ना, you need to differentiate this uh, with respect to time once. Okay, तो ये एक नॉट आपके पास आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ से जो है इफ यू डिफरेंशिएट दिस, तो ये साइन का cos का टर्म बन जाएगा. एंड दिस बिकम द साइन टर्म. तो ये साइन जो है ये वाला 0 हो जाएगा a1, और ये आपके पास a2 रह जाएगा. ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ पे यू विल बी हैविंग, बिकॉज यू नीड टू डिफरेंशिएट दिस, तो ये ओमेगा n आगे आ जाता है. तो एनीवे, you solve this and you will see that a2 will be equal to x naught dot divided by omega n. तो ये मैं आपको बता रहा था कि now you know very well x naught is the initial displacement and x naught dot is the initial velocity. Find out a1 and a2.
and omega n is also known quantity, and the only unknown will be x, this t, right? अच्छा, तो ये आपके पास mathematically this is basically this is the value of a1, and this is the value of a2. Okay, so now you can see that in this particular equation, and this solution, you have actually the only unknown t, right? So for that reason, this is actually the response of the undamped free vibrational and translational system. ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास रिस्पांस है. रिस्पांस का क्या मतलब है कि नाउ यू हैव एक्स ऑफ टी हैविंग दिस फार्मूला. ठीक है, तो इस फार्मूला में जो है ना, if you put different times, okay, you can find out various values of x. ठीक है, यानी for example t is equal to 0 q पर at time t is equal to 0 you have x naught, at time t is equal to 1 second you have x1, x2, t1, t2, etc. right? So you can plot that. तो ये आपके पास जो प्लॉट आएगा that will be for the free vibration. This is, let's say, x of t, and this is your time. You have initially disturbed this system like this. ठीक है, ये वो x naught है, और ये जो है आपके पास इसकी साइनसॉइडल इस तरह आएगा. ठीक है, एंड सिंस दिस इज अनडैम्प्ड सिस्टम, तो ये एक साइकिल के बाद भी जो है ना आपको द सेम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा. ठीक है, इट विल नॉट डिमिनिश, एंड यू कैन आल्सो लुक एट दिस थिंग आल्सो, देयर इज नो डिमिनिशिंग टर्म ओवर हियर. ठीक है, कोई टर्म इस तरह नहीं है कि ये जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम अगर ज्यादा होता है तो वो जो है ना आपके पास इस टी को कम कर रहा है. ठीक है, देयर विल बी अ टर्म इन द डैम्प वाइब्रेशन, जो कि फिजिकली भी आप वहां पे देख सकते हैं कि द वाइब्रेशन विल बी डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास क्या है, दिस इज एक्चुअली रिस्पांस ऑफ द सिस्टम. तो if you remember in in the beginning I told you that if you derive the equation of motion, you need to find out the natural frequency and the response of the system. So for that particular simple system, we found out the natural frequency and response of the system. Now if you have this free vibration of undamped but torsional system, ठीक है, इसमें r theta phi के थ्रू जो है ना आप कोऑर्डिनेट्स को मेजर करते हैं. तो if you have, let's say, this shaft, okay, having dia d, and similarly this is the height of this circular disc, and this is actually the outer dia. Okay, and this is polar moment of inertia. Now instead of having an initial displacement of x naught, we are initially twisting it by theta. ठीक है, थीटा नॉट के थ्रू जो है ना हम इसको ट्विस्ट करते हैं. ठीक है, फ्रॉम हियर, जैसे आप इसको ट्विस्ट करते हैं, देन यू रिमूव दैट डिस्टर्बेंस. have this free body diagram. Okay, and they are saying that the initial displacement, the displacement, velocity, and the acceleration. Okay, angular displacement, angular velocity, and angular acceleration, they are taken positive in this direction. Okay, and you are having this polar moment of inertia. One thing I need to tell you कि यहाँ पे जो है ना, जिस तरह हमारे पास mx equal to 0. This is actually the equation for translational system. So there is an analogy table which actually makes an analogy of the torsional vibration. Instead of having m, you are having j naught. Okay, polar moment of inertia है. Instead of having x double dot, you are having theta double dot. Okay, and plus this is k, and here we will be having torque stiffness, coefficient of stiffness, right? And this will be your x, so यहाँ पे आपके पास theta आ जाएगा. So this is the equation of motion for undamped free vibration and for torsional system, जो कि आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है, and if you want to find out the natural frequency, so kt by j naught, ये है ना, ये आपके पास natural frequency होगी, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं. ठीक है, if you want to find out the time period, so you know very well that time period is basically 2 pi over ओमेगा. तो ओमेगा की जगह, ओमेगा इन की जगह आप ये पुट कर लें तो आप टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन आल्सो, दिस इज द circular natural frequency. If you want to find out the cyclic natural frequency, you know very well that that is basically your this omega n is 2 pi f, इस चीज के बराबर है. तो अगर आपको ये चाहिए तो you can just
have this divided by 2 pi. तो ये जो है ना आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अच्छा ये फिर बताता है कि भाई हाउ टू फाइंड आउट दिस के टी, ठीक है। टॉर्सनल स्टिफनेस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो टॉर्जन के फार्मूले से आपको पता है टी एल बाई जे जी जो है ना ये वाला, ये थीटा ट्विस्ट के बराबर होता है, ठीक है। ये टॉर्जन में आपने सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ से जो है फिर यहाँ से आप एम टी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यू नो दैट कि यहाँ से फिर आप इस फार्मूले के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं के टी को, ठीक है। दैट इज टॉर्जनल स्टिफनेस। यहाँ तक समझ आ गई आपको? ओके, so this is actually the vibration of undamped system, okay. Now if you include the damper over here, so this is free vibration but with viscous damping, okay. So this is a symbolic representation of spring and this is a symbolic representation of a damper, okay. C is the stiffness or coefficient, this is the um, stiffness coefficient and this is the damping coefficient, coefficient of damping, ठीक है। एंड दिस इज दैट मास। तो इसको हॉरिजॉन्टल में भी आप कर सकते हैं, यू कैन आल्सो हैव दिस वर्टिकल। चैप्टर 1 या मेरे ख्याल में 2 में जो है ना ये भी दिखाया गया है कि इफ यू टेक दिस सिस्टम vertically or horizontally you are getting the same equation, because here actually we are having this effect of weight, ठीक है, that is in the downward direction, but that is actually compensated by these two elements, ठीक है। तो अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में ले लें या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपके पास सेम ही आएगा, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में है। ओके, so this is actually the, now we have actually spring, mass and damper system. This is spring, this is mass and this is damper system, ठीक है। so damp free vibration है हमारे पास, this is equilibrium position and the direction, this downward direction is taken as positive, right. so if you displace this mass, ठीक है, आप इसको यहाँ पे लेके आते हैं, right, so you see that there will be now two forces. One is the restoring force of the spring, that is your kx, and the other force will be the restoring, this is force that is of the damper, which is direction में होगी, ठीक है। and both of these forces will resist the motion of this mass, ठीक है। तो ये जो है ना आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम होगा, and from this free body diagram if you are using the Newton's equation, Newton's rule, तो आपके पास summation of forces is equal to inertia force mx double dot। अब यहाँ पे दो forces हैं, ठीक है। one is because we are taking this direction as positive, so minus x is one force and minus cx dot is another force and this is equal to mx double dot। if you arrange them आपके पास क्या आएगा, we will be having mx double dot plus cx dot plus kx is equal to 0। now this is the governing equation for spring, mass and damper system, ठीक है। तो ये second order ordinary differential equation है, but now here we are having this term c, ठीक है। तो damping जो है यहाँ पे हमारे पास present है, ठीक है। this is damping force, बहरहाल ये चीजें हमने कर ली, so this is actually that equation that I showed you, ठीक है। now from here if you want to find out natural frequency you can find out, ठीक है। divided by m करेंगे तो आपके पास k by m वही natural frequency आएगी। and if you want to find out the response of the system, अब response जो है ना वो different होगा definitely, because we have included a damper over there, ठीक है। so the same way you can consider this assume this solution that is c e to power st, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट करें, you differentiate this once and put it over here, differentiate this twice and put it over here and simplify, तो आपके पास आपके ये इक्वेशन आ जाएगी, m square plus cs plus k is equal to 0। and if you solve this equation, quadratic equation आप जब solve करेंगे, कैसे solve करते हैं, you can look at that thing, but if you solve this equation you will get x of t that is equal to c1 e to power s1t plus c2 e to power s2t। what is s1 and s2? these are, s1 is basically
S1 is minus C by 2m plus this thing, ठीक है, and S2 is minus C by m minus this thing, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है इस तरह. This is where C1 and C2 these are constants and the value of these constants you can determine these using initial conditions, ठीक है. अब on the basis of थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि the damping is there but this is actually the radical, ठीक है. तो यहाँ पे जो है if you see here where is that this one, this radical, okay, this one, this, on the basis of this you can categorize this damped system, ठीक है. वो कैसे categorize करते हैं? If that radical, okay, if that radical is equal to 0, अगर ये आपके पास है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं critically damped system, ठीक है. क्या मतलब है इसका कि यहाँ पे तो C फार्मूले में C by 2m है, ठीक है, and this is the square minus is equal to K by m, ठीक है. लेकिन यहाँ पे फिर हम इसको क्या कहते हैं? क्रिटिकली डैम्प सिस्टम. क्रिटिकली डैम्प सिस्टम क्या हमारे पास है? वी विल डिस्कस के एक्चुअली दिस आपने डिस्टर्ब किया and the spring takes or stores that kinetic energy, okay, and it dissipates this, but if it dissipates that kinetic energy in minimum interval of time and takes the equilibrium position in minimum time, so that damping present over there will be known as a critical damping. तो जो आइडियल डैम्पिंग है ना हमारे पास, क्रिटिकल डैम्पिंग होती है, ठीक है, दैट इज नोन एज क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है. यू डिस्टर्ब द सिस्टम एंड इट रिगेन्स इट्स इक्विलिब्रियम इन मिनिमम टाइम, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्प सिस्टम, ठीक है. बट इट डिपेंड्स ऑन द डिजाइनर. समटाइम्स जो है वो क्या होता है कि हमारे पास, अच्छा ये जो है ना हमारे पास, इफ यू फर्दर एलेबोरेट दिस फार्मूला, तो आपके पास जो क्रिटिकल डैम्पिंग का फार्मूला आता है, दिस इज एक्चुअली द 2m ओमेगा n, ठीक है. 2 इज कांस्टेंट, m इज सिस्टम प्रॉपर्टी, ओमेगा n is also you can find out from system. यार हम आज किसी को कुछ नहीं समझ आ रही, सर को बोलो यार. यार मैंने एक बार मैसेज किया, मैं दोबारा भी कर देता हूँ. मैंने सर क्लास को में बोलो, ज्वाइन, लोगों ने भी कहा है. हाँ ना, ज्वाइन ना करें, बस रिकॉर्ड भेज दें यार. क्या ये कुछ नहीं समझ आ रही. हाँ ना, टाइम भी जाया हो रहा है वैसे ही, और ना समझ आ रही, वैसे ही बैठे हैं. सच में शुरू शुरू में तो थोड़ी बहुत समझ आई, फिर समझ ही नहीं आई मुझे कुछ भी. सही कह रहे हो यार. तो लीव करें हम सब? सर से बात कर लेंगे ना. अभी भी सर की आवाज गायब हो जाती है, थोड़ी देर बीच में फिर आती है. हाँ ना यार, ये अभी लीव ना करो यार. सर यो क्या कहते हैं, हम बात को बात करने दो सर से फिर.
वाजिद मैसेज कर दिया और कॉल बिजी कर दिया उसने, अब देखते हैं क्या होता है। चलो सही है फिर। Okay, so on the basis of the value of zeta, you can categorize the systems, okay, and that is those categories of damped vibration, they are actually presented in this graph, okay. So if the value of zeta, that is 0, okay, so this means that C over CC, सर हमें स्क्रीन शो नहीं हो रहे।
सर की आवाज नहीं आ रही यार। Okay, so the value of this will be equal to 0. So you can say that C is equal to 0. This will be undamped system. Okay, undamped system, and the representation of that will be like this. Okay, that this is initial disturbance x naught displacement, and it will sinusoid like this. Okay, and per cycle, if you see, so the amplitude is not diminishing or it is not decreasing. Why? Because the damping is not present over there. Okay, now if the value of this zeta is 1, okay, so you can say that C over CC is equal to 1, and you can say that the design coefficient of damping is equal to critical damping. Okay, so this will be critically damped system. This is known as critically damped system. Okay, so two. Then third is if value of zeta is less than 1, okay, let's say for example 0.5. So your C over CC is equal to 0.5. You can say that C, that is design coefficient of damping, ठीक है, जो कि system में है, that is half of the critical coefficient. Means कि आपके पास damping है, but it is half of what is required or what is ideal. तो इसको हम कहते हैं अंडर डैम्ड सिस्टम. ठीक है, दिस इज अंडर डैम्ड सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे इशू किया गया है अंडर डैम्ड सिस्टम. तो अंडर डैम्ड सिस्टम में आपके पास क्या होता है कि द डैम्पिंग इज देयर, you see here that the system oscillates, okay, but it takes longer time to regain the equilibrium position. ये equilibrium position है. ठीक है, so you can see that and you can also see that initially, for example, if you have this displacement, so after one cycle you have this displacement from equilibrium, and then two cycles के बाद this is the displacement. So with respect to time, the amplitude of vibration decreases. That is basically the due to the damping over there. So damping is there, but it is not sufficient. Okay, it cannot retain, or it cannot regain the equilibrium position in minimum time. So that is under damped system. Similarly, if you have zeta greater than 1, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल zeta आपके पास 2 के बराबर है, so this is C over CC. So you can see that C is equal to 2 times critical damping. ठीक है, तो आपने जो है ज्यादा डैम्पिंग प्रोवाइड की है इसको. इसका क्या मतलब है कि दिस इज एक्चुअली नोन एज अ ओवर डैम्प्ड सिस्टम. ठीक है, ओवर डैम्प्ड सिस्टम. So when we have under damped system for zeta is equal to 0, then we have undamped system for zeta is equal to 0, under damped system for zeta less than 1, and over damped system for zeta greater than 1. And the right over है is not required, and critical damping, that is the right amount of damping. ठीक है, तो ये जो है ना चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमने डिस्कस की है. राइट, दिस इज क्रिटिकल डैम्प सिस्टम एंड ओवर डैम्प सिस्टम एंड राइट. ये एक ही पिक्चर में सारा डिपेक्टेड है. ठीक है, यू कैन सी दिस इज द अनडैम्प्ड सिस्टम. ठीक है, ये zeta is equal to 0 है, and this is the underdamped system for zeta less than 1. It regains its equilibrium position, but it takes longer time. इतना टाइम लेता है. लेट से फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसके बाद भी थोड़ा सा ऑसिलेट करेगा, फिर ये रेंज में आ जाएगा. ठीक है, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इट टेक्स लॉन्गर टाइम. दिस इज अंडरडैम्प्ड सिस्टम. और ओवरडैम्प्ड सिस्टम क्या है, ये भी इट टेक्स लॉन्गर टाइम. ठीक है, इट डजंट ऑसिलेट, बट इट टेक्स लॉन्गर टाइम. ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास ये ओवरडैम्प्ड सिस्टम है. एंड क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम आपके पास क्या होगा, यू हैव एक्चुअली दैट इनिशियल डिस्टर्बेंस, एंड यू कैन सी दैट it regained its original position or the equilibrium in minimum interval of time. So इसको जो है ना हम कहते हैं critically damped system. ठीक है, तो ये जो है ना comparison of motion with different types of damping है, इसको जो है ना फिर आप देख सकते हैं. ठीक है, इसकी simple example you can take that at the back of the door. ठीक है, आपने डैम्पर देखे होंगे, कन्वेंशनल डैम्पर. तो एक जो अनडैम्प्ड सिस्टम है, अगर डैम्पर है ही नहीं, सिर्फ स्प्रिंग है, तो आइडियली इफ यू ओपन दैट डोर,
it should oscillate forever and the amplitude of vibration will not decrease. ठीक है. Similarly, if there is damping pressure over there but it is not sufficient, तो 4-5 oscillation के बाद जो है ना ये अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा. That is under damped system. And over damped system अगर है तो if you open this, ठीक है, तो it will take longer time. It will not oscillate, but it will take longer time to come to the equilibrium position. And if you have provided the critical damping, तो आपके पास ये जो है मिनिमम टाइम में अपने ओरिजिनल. This was big, about the damped free vibration of translation. So I think this is enough for today. सिग्नल का मसला भी है. इंशाल्लाह we will discuss logarithmic decrement. ठीक है, इंशाल्लाह Yes, sir. in the next class. Okay जी, thank you. Thank you so much. सर जी और सर आज वाले की कुछ खास समझ नहीं आई सर. अगर ये रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना, अलग से रिकॉर्ड कर लें सर. वो पिछली क्लास वाली रिकॉर्डिंग कर